Our next session, ladies and gentlemen, is all about how do we ensure that our Tier 2 and Tier 3 cities retain their unique character while we're continuously developing them as modern cities. And who better to address this than Mr. Girish Kulkarni, a stalwart in the investment advisory and the real estate strategies, a career of over 30 years spanning ICICI, Franklin Templeton, his own venture, Suyash Advisors. He has been very instrumental in over 30 IPOs, numerous M&As, shaping India's financial as well as the real estate landscape. And we're so excited that he can join us here because he's so deeply involved in sustainability through the Ra Foundation. He's addressing climate smart agriculture and water security, and it is an absolute honor to welcome him on stage and hear from him today. Mr. Girish Kulkarni, please join us, sir. Hello, yeah. Namaste and very good evening to all the CREDAI Council members, to developer friends in all the crowd, and ladies and gentlemen. First of all, I would like to say thanks to CREDAI, Maharashtra, Nasik, etc. for organizing a really fantastic event, a very relevant event in a great location like this. So thank you. And thanks for inviting me. I will be talking to you about how some of the USP of Tier 2 and Tier 3 cities can be preserved. And I'll also talk to you about the things that my foundation is doing in nearby areas nearby to Nasik. So, frankly speaking, I mean, आप लोग इतने माहिर डेवलपर हो आपके अपने अपने शहर में अपने अपने जगह में that I don't need to teach you many things. I have just put together my thoughts, my experiences, and what I have seen over the years. It might just give you interesting ideas and pointers कि आप अपना business कैसे बढ़ा सकते हैं. So, शेखर भाई ने शुरुआत की और बोला कि भारत विकसित भारत हम लोग विजन है, मोदी जी का विजन है, अपने सब लोग अभी उसको हम लोग उसको अपने अपने जीवन में उसको इंस्पायर हो गए हैं. $30 ट्रिलियन बाय 2047, 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. और बमन जी ने कहा कि 50% ऑफ द ग्रोथ विल कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़. मुझे मैं उससे ऐड करूंगा, एक कहावत है, देयर इज नो फोर्स मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम. And this is the point, that Tier 2 and Tier 3 cities are the growth engines of idea. This is the real point. Kitne wo Bombay, Delhi, Kolkata, how much can these cities grow? It is not possible. I mean, ultimately, beyond a certain stage, there will have to be 100 cities which will grow in this country, and Tier 2 and Tier 3 is the engine of real estate development in this country. And how things have evolved, I will talk of that when I proceed. So, can we have the next slide? Can we have the next slide? Yeah. तो पहला बात यह है कि जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े सिटीज़ में है, that is unlikely to be present in the same scale in a Tier 2 or a Tier 3 city, in terms of many things, entertainment, schools, colleges, etc. But what is the USP that you have? You have a USP that you can offer a relaxed lifestyle. Now, this is becoming more and more important, especially अभी कोविड के बाद में lot of people kind of using the opportunity of work from home came to Tier 2 and Tier 3 cities, and using a lifestyle where you can stay in a smaller city and work for a larger organization, visit once in a while to your parent company and come back. So that kind of opportunity has come up after the new technologies have evolved. Other thing that Bombay और दिल्ली और बड़े शहरों में हम लोग एक दूसरे के एक बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट में भी barely know anybody else. Here you have the opportunity of presenting communities. Sense of community जो है बहुत अच्छा हो सकता है. It gives a much more better meaning to life. That's one thing which you can offer. Amenities, there are large city में amenities जो मतलब
है मतलब ऑफर नहीं कर सकते, दैट इज़ व्हाट यू कैन ऑफर इन प्लेसेस लाइक दीज. एंड what my favorite point, which is, you can offer being closer to nature, greenery, a pleasing pollution environment, better AQI, etc. Now I know that, I mean, Delhi ka to, sorry, okay, thank you. दिल्ली का तो हालत सबको मालूम ही है, I don't need to go into that. Even Mumbai has a terrible AQI. This year, most of the time in the year, AQI was 200, which is terrible, except the monsoon period when we are blessed by God. But that is the problem in all the big cities. So as a smaller city, a pollution-free environment and being closer to nature and greenery is something which you can offer. So that's what I call the green lifestyle. In cities, we are living in a concrete jungle, and what we can offer is green lifestyle. So I and Gaurav bhai were talking about what is it that a developer in a smaller city, tier 2, tier 3 city, what can he do? We were discussing that, ideating that, and here is what thoughts we had. Typically, the development size will be larger than larger in size as a 10, 12, 15, 20 acres kind of area which they will be there. The projects could be low rise, medium rise, could be independent bungalows and so on, and have the opportunity of having a very large common infrastructure. So, imagine a 10, 20 acre site where you can dedicate a compact area of 1 to 2 acres just for having a dense tree plantation. I am not talking about Miyawaki because I don't like it, but in general, you can have a nice plantation area in that. Plus, you can have common roads, the circumference, everything lined up, with large cities. And we've kind of estimated that a 10-acre project can easily have 1,000 acres. I'm even talking of in a city like Nasik or a city like Raipur or any of the cities, So it's very much possible. अगर independent house type का structure है, you can have fruit bearing trees and kitchen gardens offered to every house. And one more thing, while legally सब लोग आजकल कर रहे हैं, but I think things like rainwater harvesting are so unbelievably powerful. Sewage treatment, common sewage treatment are so unbelievably powerful. The benefits of that for the whole community are just too amazing. And this is a part of the overall lifestyle which you can offer to your potential customers. I have seen how in 3-4 years projects just become so stunningly beautiful, and they become landmark projects. The projects become a premium project. It becomes cooler than, the staying there becomes cooler than, staying in a full concrete structure. It enhances value for the customers, and frankly, आप developer हो, आपको ये पहला project नहीं है, आपको बहुत project बेचने हैं. This is how you can create your USP in a city like this, that I am known for green projects, And this is not just about, having some certification from some authority. Certification का कोई value नहीं है. You should do it from your heart, not only from your heart, as a business proposition, and provide a great experience to your customers. And I was looking at, who has done this kind of projects. I mean, I have been seeing projects for the last 25 years. Shekhar bhai, I met him first in 2005. And I went to meet him because someone told me कि अहमदाबाद में एक गणेश हाउसिंग कंपनी है, शेखर भाई हैं, वो independent bungalow projects करते हैं, and they are beautifully landscaped, lot of trees, lot of nice infrastructure. So that is how I, met him first in 2005, and we are good friends for a long time. But sorry, I pushed ahead. But that's the kind of projects which he was doing, and it's impressive what he did 20 years ago. आज की बात नहीं है. Of course, Ahmedabad was a tier 3 city in those days. Nowadays, it's a tier 1 city. So that's a different point. But there are many people, who have been doing this. Total environment in Bangalore. Of course, Bangalore is also a large city now. But total environment in Bangalore has made a name for its projects. It's so amazing how they have done. And I'll tell you a very interesting joke. How they protect existing plots how they sensibly develop the project. It's just amazing on that. North India may have come across people like Eldeco, Ashiana Housing, Greenwoods, and Good Earth in Bangalore. They all have developed excellent projects
but by being sensible about development, having excellent tree plantation, excellent common facilities, rainwater harvesting, and so on. So I think these are things which you should study. You know all of this. I'm saying nothing new, but focus and study on this. I would urge you to do that. Farmhouse projects offer a great opportunity for doing this. Today I was speaking to Mamanji, and the projects that he is doing, they have already planted 20,000 trees in their project, and they are planting 30,000 more. I mean, this is what, which it's just something which is just required now, and farmhouse projects offers this opportunity. So I came across this very interesting firm called Hosachi Garu, which does farmhouse projects around Bangalore. They take 100, 200 acre barren sites, and I've seen how the sites have got transformed over a 5-7 year period, how it is, and becomes a hot selling point. Every single senior IT person in Bangalore is desperate to buy plots in these kind of units. I've come across this very interesting project called Nivasa near Nagpur. It's a 65 acre project. They have planted about 22,000 trees, and it's so beautifully landscaped and well done. They have ponds all over the water absorption ponds all over the project, and it's sold like extremely well. I myself have used to have a large farmhouse near Khadakwasla in Pune. There are many projects on the outskirts of Pune or many cities, how they have very beautifully developed. So I think this is a great opportunity, and you should look at it seriously. People ask the question, is it practical to do these things? Will customers like it, and so on? And I think the world changed after COVID. कोविड के बाद में सब लोगों को अपने सेहत का ख्याल लगने लग गया. Everybody wants lifestyle, and people moving into so I know many people जो भी साल के 4 महीने वो लोग दिल्ली छोड़ के they go to other cities, इंदौर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, गोवा जाते हैं, because it is almost impossible to live there. And I think these kind of things will catch on, and that kind of lifestyle will emerge, definitely emerge, so to speak. Lot of people are doing what is called as staycation using Airbnb. So Airbnb लेते हैं 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. They work from there, and once in a while they will go to their office in whichever city it is in and come back. So this kind of lifestyle is happening all over the world. It's happening, and there is no reason why it will not further accelerate in India. The other thing is, now there are crores and crores of NRIs all over the world. Many of them are in the age of 55, 60, 65. They have a semi-retired lifestyle. हर साल में वो लोग इंडिया आते हैं, 3 महीने 4 महीने रहते हैं, सबकी शादियाँ अटेंड करते हैं, and I think they are the kind of people who is a good target market for these kind of projects. So projects के बारे में तो मैंने बहुत बात कर लिया, सब करना चाहिए. I think all of you know it. You just have to focus on it, get the right consultants, get the right experts, कैसे करना, क्या करना, and put your heart into it. I'm sure it can be done. So I am now trying to go beyond project. Project तो ठीक है, but हर एक शहर के 15, 20, 25 किलोमीटर के आसपास में बहुत कॉमन लैंड, बैरन लैंड रहता है. कॉमन लैंड, ग्रेजिंग लैंड, गौचर जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, उसको पैस्चर लैंड बोलते हैं. तो उसमें वो लैंड के बारे में आप डेवलपर हो, आप सिटी के बड़े बुजुर्ग हो, आप एक जिम्मेदारी रखते हो, आप डेवलप कर सकते हो. आप एक सिटीजन्स मूवमेंट करके वो सब टाइप के लैंड्स जो है उसको आप डेवलप कर सकते हो. और एक एग्जांपल है, हर एक शहर में मैंने देखा है छोटे छोटे नाले रहते हैं, छोटे रिवर्स रहते हैं, सब गंदा है, पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड सूवेज जाता है उसके अंदर, गंदा है. आप प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो सिटीजन्स का कि government should focus on solving these kind of problems. It will make your city better. It will making living there better. It will become a leading attraction for people to come and stay there, and build businesses there. So that is something which you should consider very actively. I have given couple of examples. इंदौर के बारे में सब लोग जानते हैं. In 25 years, this city has rapidly transformed itself into a great attraction and magnet for practically every business in the country. So many IT companies have come and set up large outfits there,
The common citizens initially led the outfit, और जैसे कि गवर्नमेंट का होता है, they jumped onto it and they have now working with the common citizens to make it into something really, really big. So I think this is a very great example of how it is possible. I know about a very interesting initiative in औरंगाबाद, यहाँ से नज़दीक में ही है. वहाँ पर एक रिवर कम नला था, सिटी के बीच में बह रहा था, खाम रिवर, और सिटीज़न लेड मूवमेंट में उसका 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच अच्छा कर दिया, removing the silt and making it nice, removing dirt, garbage, and making nice parks out there, became very good. And now government of Maharashtra suddenly realized कि ये citizens movement है, अच्छा चल रहा है, so why not? So they also joined hand, and now entire 28 kilometer of river is being desilted and made proper and nice. So this is what I mean by citizens initiative. इसी शहर में मुझे मालूम है नमामि गोड़ा जो गोदावरी के बारे में इनिशिएटिव है, वो भी अच्छा चल रहा है, मोमेंटम पिकअप कर रहा है. So this is the kind of initiative which every developer, you are a big man in your community, you should do this, and you become a leading light, and you will gain better traction also for yourself and your company. A little bit about myself, मैं क्या करता हूँ. मैं मेरा वैसे कहा था, मैं लास्ट 35 साल से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काम करता हूँ, वर्किंग विथ मेनी फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. 12 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने एक NGO फॉर्म किया, राह फाउंडेशन, रास्ता राह, और हम लोग सोशल प्रोजेक्ट्स करते हैं पालघर, सह्याद्री के आसपास में, बोथ साइड ऑफ सह्याद्री, ऑन दी विंडवर्ड साइड एंड ऑन द लीवर्ड साइड, पालघर, नासिक, अहिल्यानगर और रायगढ़. पहले हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया है, वो काम चल रहा है. फिर धीरे धीरे फार्मर्स के बारे में, मतलब पानी अवेलेबल हुआ तो we have built almost little less than 100 check dams, 200 wells, to make 70,000 people having full water security, drinking water security, and 2,000 farmers are able to do multi-cropping because of the efforts we have made. So teaching them how to do climate smart agriculture. फिर food forest में evolve हुए, सबके पास fallow land रहता है, उसके ऊपर आप trees, fruit trees और non-fruit trees लगाओ, मतलब timber वगैरह जो भी है. So what happens is that you are able to, it's a combination where the farmer can earn income over the long period of time from fruits and from the forest produce, as well as it's great for environment and sequestering carbon, soil preservation and so on. So that is the project of food forest. And last and most important, we are doing ecological restoration of degraded forests in Sahyadri. Sahyadri के forest लगभग 80-90% कट गए हैं. And this is the most important region for India, which I will talk about later. So we are doing this kind of work in many places, but the biggest projects is Nashik district. यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दरी मातोरी करके जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने सिंगल लार्ज प्रोजेक्ट 580 एकर्स का रेस्टोरेशन किया हुआ है, planted 100,000 trees, built 110 loose boulder dams and gabion structures, and protected the whole area. Similarly, another 150 acres in near Anjaneri, and many other places in Nashik district we are working. We are working on many other large projects, and funds partly come from me and my family, but also supported by many other large CSR funds. Some of the developer friends here, Shekhar bhai, Vijay ji, Michandani, ये लोगों ने बहुत support किया है. Vijay ji, in fact, very interesting thing he has done कि उनके project में हर एक flat बिकता है, तो हर एक फ्लैट के सामने वो 1 एकड़ का प्लांटेशन का हमको सपोर्ट करते हैं. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ हाउ वी कैन वर्क टुगेदर. सो शेखर भाई सपोर्टेड वर्क फॉर मेकिंग 5 villages water positive for water many years ago, and I will go to him again shortly again. मैं क्या हक से बात करता हूँ, क्योंकि कैसा है कि I spend my own money and I am writing checks myself, so I have no shame in asking people for checks. So this is the project which we are doing. Regreen Nation बोलते हैं हम इसको, recreating the lost forests of the Western Ghats, Sahyadris. It's some statistics on what we have done in terms of organization. I mentioned all this, so I'll skip this slide. Sahyadri or Western Ghats जो है, it's a very important, it's a UNESCO World Heritage Site. It's the 7th most important site in the world. Number 1 is of course Amazon, but 7th most important site. और यहाँ पर 30% of India की biodiversity is in this area. And monsoon weather pattern जो है India का, important shape is determined of that entire pattern by the Western Ghats.
and so many large rivers emanate from the Western Ghats is an extremely important thing. और ये अगर चला गया तो अपने कंट्री के बहुत बहुत लोगों का ज़िंदगी के लिए धोखा है. How we will conduct their life. So we are working on this. I mean इसके लिए 100 ऑर्गेनाइजेशन लगेंगे, लेकिन हम अपनी ओर से जितना कर सके उतना कर रहे हैं. You know, I mentioned all of this. 245 million lives depend on Western Ghats. So far, we have restored more than 1,200 acres of contiguous forest in Nashik district alone, and 2,000, a little under 2,500 acres across Palghar and Nashik in individual 1 acre plots. That is separate. Our goal is to do much more. I'll give you an example of what this is a project we have done. 2022 में ये hill था, ऐसे था. It is how it was a couple of years ago with Dari village में. And you can see the grasses growing there. Now grass is extremely important क्योंकि grass से पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है and entire area becomes full of water. Grass से spider आते हैं, butterfly आते हैं, birds आते हैं, animals आते हैं, and that is how the biodiversity comes back. So this is very very important. Apart from planting trees, वो तो करना ही है, but this is another important aspect. ये वाटर होल्स बनाए हैं, ये अप्रैल 2024 का लास्ट ईयर का पिक्चर है, और ये नवंबर 24 का. सिर्फ 7 महीने में कितना चेंज हुआ आप देख लीजिए. जो ट्रीज प्लांट किए हुए. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में मुझे हमको भी शौक लग गया जब हम लोग बोलते हैं कि सब बैरन फॉरेस्ट है, बैरन माउंटेन्स हैं. 10-15% फिर भी ट्रीज रहते ही हैं उधर. दे आर देयर बट दे आर स्टंटेड. इफ़ यू प्रोटेक्ट देम फॉर 2 years they grow by 6 to 8 feet. 3 से 4 feet per year का growth आता है, which is a shock to me. I did not know कि इतने branches grow होते हैं. So even conserving itself can revive the forest apart from planting new trees. This is an example. ये दरी हिल है, December 23 का पिक्चर ऊपर वाला है और नीचे November 24. Look at the increase in the tree cover. एक साल में, same season में है. It is same November-December season, not monsoon. And look at the increase in trees. ये एक साल में हुआ है. 5 साल में क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं. दिस इज वॉट वी हैव टू डू. नेचर इज वेरी पावरफुल एंड नेचर कैन डू वंडरस थिंग्स, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए हमको उसको पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा. ये अभी सेम है. ये ऑन द वे टू त्र्यंबकेश्वर आप सुबह कल देखेंगे. राइट वाला जो है वो ग्रेजिंग लैंड है और लेफ्ट वाला जो है ये हमारा कंजर्व्ड लैंड है. अगेन 1.5 years में कितना फर्क पड़ा है आप देख लीजिए. कैसे करते हैं तो मैंने बोला था, फर्स्ट वी स्टार्ट बाय कंजर्विंग द ग्रासेस. ग्रास कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज वेयर द पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट्स. दूसरा है कम्युनिटी एंगेजमेंट. अल्टीमेटली ये झाड़ किसने काटे हैं? झाड़ काटे हैं हम लोगों ने काटे हैं. हम लोगों ने मतलब जो गरीब लोग हैं उन्होंने झाड़ काट के बेच के मतलब वुड बनाया, वुड बेच के पैसा कमाया जिंदगी के लिए और जलाने के लिए. पीपल हैव डन दिस. पीपल ऑल ऑफ अस हैव डन इट. वी हैव क्रिएटेड फार्म हाउसेस. वी हैव डन सो मेनी थिंग्स. So we need to engage with the communities and explain to them ki how conserving the nature is beneficial for them, how their survival is dependent on it. That is what we have to do. हम लोग हर एक गांव में जाते हैं, कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप पहले चीज़ है ग्रेजिंग बंद करो. ग्रेजिंग बंद करो तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे गाय भेड़ है, you know what to do. So we say okay, you keep some part for yourself, balance you give for conservation. तो जो कंजर्वेशन का लैंड है वहाँ पर हम लोग गांव के ही लोगों को वन रक्षक बनाते हैं और उनसे ही कंजर्व कराते हैं. फेंसिंग तो पॉसिबल नहीं है बट दिस इज हाउ ह्यूमन पीपल कैन डू इट. फिर हम लोग सॉइल एंड वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हम लोग लूज बोल्डर डैम्स बनाते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं. जो आपको ऊपर वाला लेफ्ट का स्ट्रक्चर है दैट्स ए लूज बोल्डर डैम. ऐसे हम लोगों ने मैंने कहा एक साइड के ऊपर 100-150 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. फायर लाइन बनाना जरूरी है क्योंकि फॉरेस्ट फायर इज वेरी common all over India and this area has lot of forest fire. In our site we had a forest fire 40 acres lost just 3 days back. तो उसको अगर आप फायर लाइन क्रिएट करेंगे तो फायर उधर रुक जाता है. ये इंपॉर्टेंट है. और फार्म पॉन्ड्स क्रिएट करते हैं जहाँ नेचर से पानी आता है. वी यूज दैट वाटर फॉर गिविंग इट टू दी. 5 साल आपको मेंटेन करना पड़ता है जब तक झाड़ का लेवल एक लेवल आता नहीं है. सो उसके लिए यू नीड वाटर. ये अभी साइट के ऊपर ट्री प्लांटेशन का काम का पिक्चर है. टिपिकली हम लोग 60% फॉरेस्ट स्पीशीज लेते हैं, 20% फ्रूट एंड इनकम स्पीशीज जो गांव वालों को काम आ जाए और 20% मेडिसिनल स्पीशीज जो बाद में भी गांव वालों उसके मतलब फॉर इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी. सो यहाँ पर गाड़ी जा नहीं सकती है तो लोग द विमेन एंड मेन दे कैरी दी प्लांट्स ऑन देयर हेड टू प्लांट इन द मानसून सीजन एंड दे हैव टू ब्रेव वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स टू डू दिस.
बाद में वी हैव टू डू वाटर कंजर्वेशन, वाटर मतलब मैनेजमेंट के लिए, पानी देने के लिए वी हैव टू क्रिएट ऑल दीज पाइपलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सोलर पैनल, अब तो वो सोलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लोग पंपिंग करते हैं. एंड इन्वेजिव स्पीशीज, ऑल ओवर इंडिया इन्वेजिव स्पीशीज जो है बहुत फैल गई हैं. लेंटाना इज़ वेरी बिग, then there is so many of them. Congress grass is there, then there is Gliricidia. All these species are very bad, they kill the growth of other species, so we have to physically remove them. तो वो भी हम लोग काम करते हैं. एंड अल्टीमेटली ठीक है, हम लोग प्राइवेट सिटीजन्स हैं, हम बहुत कुछ करेंगे, हमारे पास पैशन है, हमारे पास हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा है, हम लोग 1 रुपये का काम 20 पैसे में करते हैं, सब है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो हमेशा अच्छा रहता है. सो इन नासिक वी हैव एग्रीमेंट विद दी Zilla Parishad that they support us by giving Narega labor, Narega payment for labor. That's what we get from them. That is a MOU being signed by me and my wife and our team with the CEO of Nasik. Joint Forest Management Committee with Forest Department हम लोग tie up करते हैं. That's what we do. नर्सरी, अभी सीड्स कहाँ, अभी फॉरेस्ट के ट्रीज है ही नहीं किसके पास में. सब लोग के पास रोज ट्री है, छोटा छोटा ऑर्नामेंटल ट्रीज है, लेकिन वेयर डू यू गेट फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम? दैट वी डू अ फॉरेस्ट कलेक्शन ड्राइव. हम लोग ट्राइबल विमेन को लेके वी गेट देम टू गेट द सीड्स एंड वी प्लांट द सीड्स एंड वी मेंटेन नर्सरी. एंड 6 लाख हमारे सैपलिंग्स अभी रेडी है फॉर एवरी ग्रोथ एवरी ईयर. राइट बॉटम में बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, वो सम सीड्स वी कन्वर्ट देम इनटू सीड बॉल्स. और अगर एकदम रॉकी माउंटेन है जहाँ पर हम लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते, हम लोगों ने एयरफोर्स के थ्रू हेल्प लेके 3 लाख सीड बॉल्स एयर ड्रॉप किए ऑन द रॉकी आउटक्रॉप. वो 3 लाख में से मतलब 3000 भी सर्वाइव हो गए तो आपको 3000 ट्री ऑन द बैरन रॉक मिल जाएंगे. दैट इज व्हाट वी हैव डन. एयरफोर्स वाज काइंड इनफ टू हेल्प अस एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दिस. वही मैंने बोला, हम लोग हर एक गांव में ग्राम विकास, अल्टीमेटली हम लोग कितना भी ज्ञान देंगे ना, बोला आप शहर से लोग हो, व्हाट इज इन इट फॉर मी इन माई विलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्राम विकास समिति बनाते हैं एंड ट्राइंग टू कन्विंस देम ऑफ द मेनी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस. लोकल फोक आर्ट है, भारूड आर्ट है जो महाराष्ट्र में प्रेवलेंट है, उससे हम लोग कन्विंस करते हैं लोगों को कि बॉस वाई डू वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट. एंगेजिंग ऑफ स्टूडेंट्स, NSS वॉलंटियर्स वगैरह. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और आई वुड से ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस. क्योंकि अगर आप जंगल क्रिएट करेंगे तो लेपर्ड आएगा, हाइना आएगा, वुल्फ आएगा. हाउ डू वी मैनेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी वर्क ऑन ऑल्सो. एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कैसे फास्ट ग्रोथ हो सकता है, हाउ यू नो इट इज़ पॉसिबल. ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी था. हम लोगों ने जो जहाँ जहाँ प्लांटेशन किया है, वी मेजर्ड द लेवल ऑफ वेल वाटर इन द सराउंडिंग एरियाज एंड what we find is that there is huge increase in well water in surrounding areas. तो हम लोग गांव वालों को बोल सकते हैं, आप पूछ रहे थे कि हमारे लिए क्या है, आपके लिए आपके वेल में पानी आएगा, आप खेती कर सकते हो. That is important for you. That is how it will, the overall ground water level increase, and that's how it works. We created livelihood for all this plantation activity. That is also there. Increase in biodiversity. I will skip. She is coming now. All our supporters who are there, who have supported us, funded us in all these efforts. और हमारा गोल है 50,000 एकड़ हमको फॉरेस्ट क्रिएट करना है in the next 7 years, 6 years now. And we need support from everybody in whatever manner they can. Thank you. गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन. आप बहुत ही बेहतरीन और महत्व वाला काम कर रहे हो. प्लीज स्टे विद मी. I'd like to invite Mr. Shekhar Patel on stage to kindly felicitate Mr. Girish Kulkarni for that incredible presentation and great insights. Thank you so much. Welcome, sir. Girish sir, please come center stage so that we can capture this moment beautifully. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Girish Kulkarni. Thank you, sir. Thank you very much.